everyone, so this is Shubha and today we are going to solve one more very simple exercise on sentence equivalence. I'll make it simple for you because I'll tell you some of the best tricks how to solve the sentence equivalence part. Right, so as we are practicing one exercise in one go, I hope you are watching the previous videos also which I have recorded for you. So it will make your journey of verbal reasoning very easy for you, right? So in case you're a new one for me, so I'll just tell you that in my start in the videos, I'll just introduce you to the exam pattern. Like the verbal reasoning is divided into 3 sections where 50% of is reading comprehension, which is based on 2 parts. One is the logical RC, another is the simple one, right? Then you have 25% of sentence equivalence and 25% of the text completion. So this is the entire domain, how we are practicing, how we have started with verbal reasoning. And I'll tell you very beautiful hacks how you can solve it with the best of the tricks. Now, for the ones who are unaware, what do you mean by sentence equivalence? So similar way, it is a complete statement is given where a blank is left for you, where you are given 6 of the options, out of which 2 are the right ones and those 2 are actually synonyms of one another and you have to put it in the blank. So it's very simple one. Now, how to solve it? Let's start with the sentence equivalence exercise. Now, as I tell you, being a literature, I have been a literature student. So, how to read the sentences? First thing, I told you in my previous video also, whenever there is a punctuation mark, do stop while even you are reading. First, read it in one go. How much you understood, no matter what. In the 19th century, pause. Thomas Carroll called economics what? The dismal science. Pause. In part because of Malthus' theory that means it's giving us a reason that population growth would outpace our natural resources, okay, causing widespread dash what. Now, this is a way you just read a sentence in your mind when you are actually reading any of the literature line, right? So you have to pause at the punctuations and then whenever there's a dat, so you have to wait for some kind of a reason, right? Now let's solve it out. In 19th century May, Thomas Carroll called economics. Thomas Carroll was a literature, you can say he was a literary person. He called economics. Usne, ab that is a person, let's denote it with pictorial representation. He was a person. Usne economics as a subject ko bola, the dismal science. Now what do you mean by dismal? Dismal is something that is causing some kind of a distress या बहुत ज़्यादा dim सा, negative. It's a negative word. You can say dis आ गया ना, dis means a negative. तो आप negative word नहीं पता था मतलब, तो just think it's a negative signs. In part because, क्यों बोला उसने negative signs? In part because Malthus की theory के कारण, Malthus की theory क्या थी? That population growth would outpace, कि जो population जिस तरह से grow हो रही है, वो outpace कर जाएगी. अब हमें आउटपेस का मतलब पता होना चाहिए बिकॉज इट रेगुलेट्स द एंटायर, वो थ्योरी ही आउटपेस पे बेस्ड है. इट वुड आउटपेस अवर नेचुरल रिसोर्सेज. क्या कर देगी? मतलब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कम हो जाएंगे. और खुद सोचो, अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो क्या कॉज करेगा? वाइड स्प्रेड, बहुत ज्यादा क्या कॉज हो जाएगा? कमी, किसी चीज की कमी हो जाना. और क्या हो सकता है वर्ड? डर्थ, स्कार्सिटी, है ना, क्या पता फैमिन आ जाए, कुछ भी हो जाए. मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ, पहले तो ये सोच लो पॉजिटिव वर्ड तो नहीं आएगा मैम, नेगेटिव ही आएगा. क्योंकि जब में आप खुद सोचो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, खाने को कम होगा, तो लोग एक दूसरे को मारने पे आ जाएंगे कि किसी ना किसी तरह से उनको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है. सो दैट इज व्हाट द सेंटेंस डिमांड्स. Let's refigure it. In 19th century में थॉमस कैरल ने इकोनॉमिक्स को बोला डिसमल साइंस, नेगेटिव साइंस. In the part because of Malthus की थ्योरी के कारण. That Malthus की थ्योरी किस चीज पर बेस थी? That population जो ग्रोथ होगी वो आउटपेस कर जाएगी. ठीक है, आउटपेस करना मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड क्या हो जाएगा? इट वुड बी अ काइंड ऑफ कमी हो जाएगी, फैमिन हो जाएगी, डर्थ हो जाएगी, स्कार्सिटी होगी, चीजें नहीं मिलेंगी हमें, इस तरह से, मतलब नेगेटिव वर्ड. नाउ आई मेड यू क्लियर अबाउट द सेंटेंस एंड आई होप यू आर क्लियर विद इट. Before that, now let's get to the meaning of the 6 words.
फिर देखते हैं एलिमिनेशन मेथड पे कौन से दो हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे और कौन से दो ऑप्शंस हैं जो आपके लिए बेस्ट है। डर्थ का मतलब क्या आ जाता है, एज आई टोल्ड यू, इट इज लाइक किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की स्कार्सिटी होना, किसी चीज की कमी हो जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डर्थ, राइट। नेक्स्ट इज योर पुलक्रिट्यूड। पुलक्रिट्यूड मीन्स जब आप किसी चीज को ब्यूटी, ब्यूटिफुल, मतलब एक पॉजिटिव वर्ड डिनोट करते हो, मतलब वाओ व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ पुलक्रिट्यूड, राइट, या किसी चीज को ब्यूटिफुल बोलते हो, दैट इज टर्म्ड एज पुलक्रिट्यूड। नेक्स्ट इज योर रैप्चर। रैप्चर का मतलब क्या होता है? अब रैप्चर का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंजॉय करना, प्लेयर, लाइक इट्स अ फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय यू कैन कॉल, इट्स अ फीलिंग ऑफ इंटेंस प्लेयर यू कैन कॉल, सो दैट इज टर्म्ड एज रैप्चर। व्हाट इज टर्म्ड एज एक्चुअली रेविशमेंट। So, जो रेविशमेंट है दैट इज एक्चुअली, जैसे ये एक ब्यूटीफुल वर्ड था, ठीक है, दिस वाज रैप्चर वाज लाइक एक जॉय की फीलिंग होना, उस तरह से रेविशमेंट आ जाता है किसी चीज को फोर्सफुली लेना, मतलब रिमूव करना, टेकन अवे, जैसे कुछ चीज उठा के ले जाना, लाइक वायलेंट एक्टिविटी, रेप्स एंड ऑल दैट एक्चुअली कम्स इन रेविशमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली यू कैन कॉल एज अ removal, but it's actually a forced one, right? So next is your famine. तो everyone knows famine का मतलब क्या आ जाता है, जिसमें आपके पास scarcity है, shortage है, food की होना, like any of the facilities. So it is actually you can say shortage of food, yeah, you can call it as scarcity only, that would be the best way. And the last word is debauchery. Debauchery is excessive indulgence, and you can say a person who is extremely indulged in sex, alcohol or drugs. So when a person is excessive indulged in sex, drugs and alcohol, that is termed as debauchery. Now these were the 6 words which we had. हम बात कर रहे थे कि एक 19th सेंचुरी में, लेट्स मूव बैक टू द सेंटेंस नाउ, हमारे पास 6 ऑप्शन थे जो मैंने आपको बताए कि 19th सेंचुरी में थॉमस कैरल नाम का एक पर्सन था जिसने इकोनॉमिक्स को डिसमल साइंस बोला, ठीक है, और उसने बोला मेल्टन की थ्योरी पे बेस्ड पे दैट पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो आउटपेस, दिस इज अ स्टार ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि इसकी वजह से ही सारी की सारी चीजों को बोला जा रहा है। इस वजह से नेचुरल रिसोर्सेज कम होंगे, पॉपुलेशन आउटग्रो कर जाएगी, जिस वजह से बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड क्या होगी, कमी हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी। ऐसा वर्ड चाहिए हमें, ब्यूटीफुल वर्ड नहीं चाहिए, एलिमिनेटेड एट वेरी एंड। रैप्चर पॉजिटिव वर्ड नहीं आएगा, एलिमिनेटेड। कोई यहाँ पे इंडल्जेंस ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल, सेक्स किसी की नहीं हो रही है, रिमूव इट। वी आर लेफ्ट विद द 3, डर्थ, रेविशमेंट एंड फैमिन। फोर्सफुल रिमूवल भी किसी चीज का नहीं हो रहा, लीव इट। 2 are left, that is dearth and you can say famine, which approximately means the same, क्योंकि दोनों में ही क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। Let's go to the explanation now. Dearth and famine, the correct pair must be the idea of the population growth outpacing natural resources, क्योंकि ये statement ही हमें highlight कर रही है कि उससे क्या होगा, natural resources कम हो जाएंगे, right? So that is having too many people to be supported by natural resources, फिर बहुत ज़्यादा लोगों को support करना पड़ेगा, and it is famine and dearth are not synonyms and but are the only words that match the ideas of shortage. अभी एक तरह के synonyms नहीं आते, but they are like a pair can be formed in them, right? So this is there in 19th century, same way dearth and famine are the words. Then you can go to the meanings of these. Dearth means where it is an absence, shortage, deficiency, defect. Famine, paucity. Famine is actually a kind of poverty, scarcity, kami hona, misery hona, drought hona. Dearth is a scarcity or lack of something, किसी भी चीज की कमी हो जाना, because there was a dearth of evidence, the district attorney had to adopt the charges, right? And famine means a severe food shortage, खाने की कमी होना, right? So when there is a shortage in the food supply and all that. So then as rapture, rapture is a kind of a mood of great joy or love, बहुत खुश होना, intensely. John is a spiritual man who claims he experienced rapture during his baptism. So it is cheerful, muted, bliss, buoyancy, scarcity, cheer, cool. Ravishment, I told you, it can be in the both the ways. It can be a forceful removal. It can be the intense state of joy also, right? So it can be cool, inertia, delight, joy. So in both terms, it can be used. Debauchery is when you're extremely indulged in sensual behaviors. It can be, you can say, drugs, sex, and alcohol. So it is there like this: depravity, dissipation, bender, lechery. Now do remember,
One word can be used in two different forms, that is too obvious. Pulchritude, it is actually something that is very beautiful, very beauty, physical beauty, glamour, attraction, adorable, allure, loveliness. Because we all know that beauty is only skin deep. You should always look beneath the pulchritude. Like, you should not fall for beauty, but you should fall for the heart of the person, right? So that was all, and their way I have introduced you with a little of the video. We have done all the sentence equivalence exercise. I hope you have enjoyed it and you have learned it by heart. Now here through it, I have made you learn one exercise with lots of vocabulary words. Do remember, these are very easy. We need to follow just the slight tricks, and I'll be coming with lots and lots of videos for you. Keep sharing, keep learning, and do motivate yourself to learn more and grow more. Take care. Have a nice day. Bye-bye.